Welcome back. Prime Minister Narendra Modi just concluded his address while attending the Centenary celebrations of Gita Press in Gorakhpur. The Prime Minister did speak on the decision of Gita Press being conferred with the Gandhi Peace Prize 2021. And he did, in fact, hit back at all of those critics who'd questioned that decision and called it a travesty. He said Mahatma Gandhi enjoyed a special connection with Gita Press. Let's quickly listen into what was said by the Prime Minister just a couple of minutes ago. गांधी जी का गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में गांधी जी कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे और मुझे बताया गया कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का 100% अनुसरण कर रही है। Let's go across to Mohit, who continues to stay on with us. Very interesting as we keep up with the latest visuals coming in, and shortly the Prime Minister will be seen inaugurating and flagging off the Vande Bharat Express as well. What was said by him is very important and important to highlight as well, Mohit, because, you know, on one hand you had the Congress just a couple of days ago say that the fact that Gita Press is being awarded the Gandhi Peace Prize is like giving an award to Godse or Savarkar. The Prime Minister says he did enjoy a special connect with Gita Press instead. Well, yes, and Prime Minister specifically referred to that. And you know, when this whole controversy over Jairam Ramesh broke out, we saw that how the Congress party, Jairam Ramesh tweeted, and then the BJP clearly stated that it was Mahatma Gandhi who suggested Gita Press not to take any funding, not to do anything in that particular regard when it comes to funding. And Gita Press has always accepted and respected Mahatma Gandhi. We also have now, Katrine, we'll just take that question to Lal Mani Tiwari ji. He's the manager of Gita Press. Sir, प्रधानमंत्री आज आए हैं। तिवारी जी, गीता प्रेस के पूरे इतिहास के बारे में बताया किस प्रकार से अगर धर्म की बात हो, स्पिरिचुअलिटी की बात हो, कल्चर की बात हो, एक तरह से रिजुमिनेशन जो किया गीता प्रेस ने 1923 से और अब तक करती आ रही है उसके बारे में बताया। कैसा मौका है आप लोगों के लिए? देखिए, ऐसा है कि आज तो एक ऐतिहासिक दिन था जी। ये आज का दिन गीता प्रेस के इतिहास में बहुत मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा और उसके बाद भी रेखांकित किया जाएगा। केवल मोटे अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद उसको अंडरलाइन किया जाएगा। आज ऐसा दिन है, आज गीता प्रेस के लिए गौरव के क्षण थे। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वागत किया वो उनके स्तर से तो कुछ नहीं था। स्वागत एक छोटी सी गीता प्रेस जैसे जगह में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यक्रम दिया, अपना समय दिया और गीता प्रेस को आशीर्वाद दिया। इससे बड़ी चीज़ और हम क्या कह सकते हैं? तिवारी जी, जिस प्रकार से जब गांधी पीस प्राइज मिला था, बात हुई थी गीता प्रेस को मिलने के बाद, फिर कांग्रेस के कुछ नेताओं के ट्वीट आए थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने खुद जवाब दिया कि महात्मा गांधी ने आखिरकार गीता प्रेस के बारे में कल्याण में जब वो लिखते थे क्या क्या कहा है। आखिरकार आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप गीता प्रेस को शुरू से जानते हैं, कि गीता प्रेस और महात्मा गांधी का क्या रिश्ता था? देखिए, कल्याण के पहले अंक में से महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित हो रहा था। लगभग 35-36 लेख कल्याण में प्रकाशित हुए थे। और हमारा लीला चित्र मंदिर देखिए, जहां भगवान राम की लीला के चित्र हैं, जहां भगवान कृष्ण की लीला के चित्र हैं, जहां बाकी देवी देवताओं संतों के चित्र हैं, वहां आज भी महात्मा गांधी जी का चित्र मंदिर में लगा हुआ है। इससे बड़ा प्रमाण हम और कुछ नहीं दे सकते। धन्यवाद। So there you heard the manager, Lal Mani Tiwari, speaking to us. He also talks about that how exactly there was relationship between Mahatma Gandhi and the Kalyan magazine, and how highly he spoke about Gita Press. Now we'll just move towards that side and we'll try to show you that what exactly has Prime Minister, the place the Prime Minister has visited. But as of now, we'll check that whether we'll be allowed to move towards that side or not. But yes, this is the entire campus of the iconic Gita Press over here. And Prime Minister, while speaking about Gita Press, also talked about how exactly there was the rejuvenation of Gita Press, of our literature, of our culture, the social literature,
during that particular time, and this was the program area over here. But you see, now Prime Minister has gone to Gorakhpur railway station, where he will be flagging off Vande Bharat Express, which will run 6 days a week from Gorakhpur to Lucknow. So there's also a massive infrastructure and development push in this particular visit of Prime Minister Narendra Modi. And we also know that how the total makeover of Gorakhpur railway station will also take place. So we have the stage over here where Prime Minister was. He spoke from this particular area, and Prime Minister clearly silenced the critics who were raising questions on conferring of Gandhi Peace Prize over to Gita Press. Prime Minister talked about that how Mahatma Gandhi suggested Gita Press that they should not be taking any funding when it comes to Gita Press's book. And also Prime Minister talked about well, not only did the Prime Minister talk about Mahatma Gandhi's relationship, or rather the connect that he had with Gita Press, but also in fact spoke of how Gita Press has been the torchbearer of spirituality, how it continues to guide one and all in our country. Let's quickly listen into that particular excerpt as well. 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्वलित हुई, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है. So the couple of other aspects as well which were touched upon by the Prime Minister, Mohit, spoke of how Gita Press has been the torchbearer of spirituality, spoke of how its office has been no less than temple, and how its publications have often united the entire country together. And that's the sentiment that's being spoken of by the entire team of Gita Press as you've been speaking with them. Well, you see, the Prime Minister also spoke about that how due to the attack by the foreign invaders, due to the colonial rule, if you talk about our literature, our religious texts, they were all on the verge of extinction. It was Gita Press way back in 1923, when the cost of printing the books was very high, came out with an idea that they will be publishing religious, cultural, sacred textbook to bind the country together, and they will be providing them to the people of the country, to the common man, at a very minimal rate. So that was one important aspect that happened at that particular time, and Prime Minister also highlighted it. Remember, Gita Press never takes funding from anybody, and also the cost of the publishing of book is way more than way more than the price on which they sell those books. So it has never been a profit-making business for Gita Press. We'll try to get a few more voices over here, because talking to the people is very important, given the fact that how we know what exactly has Prime Minister spoke also has a larger political connotation. Sir, आपसे बात कर रहे थे, आप तो ट्रस्टी थे, हम आपसे बात कर रहे थे. सर, प्रधानमंत्री ने जब ये कहा, जब प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि जो हमारी ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश टाइम पे, अगर उस टाइम की बात की जब गीता प्रेस बनी, सस्ते रेट पे ऐसी किताबें मुहैया कराना बहुत मुश्किल था, क्योंकि प्रिंटिंग उस समय बहुत महंगी थी. उस समय गीता प्रेस का योगदान प्रधानमंत्री ने खास तौर पे बताया. उस समय की जो कठिन परिस्थितियां थी, उसकी तो कल्पना करना भी मुश्किल है. उस समय तो टाइप सेटिंग का जमाना था, और शुद्धता की तो कोई पहचान ही नहीं थी. शुद्धता को मिल पाना और शुद्धता को देख पाना किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के लिए दुर्लभ था. तब लोगों ने सजेशन दिया, यदि इतनी शुद्धता चाहिए तो आपको अपनी प्रिंटिंग प्रेस लगानी चाहिए. तब गीता प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस का काम किया. और उस समय पेपर तो कोटा में मिलता था, तो पेपर मिलता ही नहीं था. उस समय पेपर मिलना मेहनत करने से फिर मिलना चाहिए. प्रधानमंत्री ने एक और बात कही. प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी के सजेशन पे ही आप लोगों ने फंडिंग, जो गीता प्रेस थी, जो उसके फाउंडर्स थे, जो समय लोग एसोसिएटेड थे, उन्होंने फंडिंग के लिए मना किया. और क्या क्या बातें हुई थी, गांधी जी ने क्या क्या कहा था, जरा दर्शकों को बताएंगे. गीता प्रेस के सिद्धांत इतने मजबूत थे कि गीता प्रेस के जो आदि संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार थे, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए भारत सरकार ने प्रपोज किया था. और उस समय उन्होंने बोला, भारत रत्न के लिए मेरे से बहुत अच्छे, बहुत योग्य लोग मौजूद हैं, और उन्होंने बहुत विनम्रता से उसको अस्वीकार कर दिया था. गोविंद वल्लभ पंत, जो भारत के गृह मंत्री थे, वो
व्यक्तिगत रूप से उनके पास वो अवार्ड लेके आए थे। तो सर आज प्रधानमंत्री आए हैं, कितना बड़ा ओकेजन गीता प्रेस के लिए भी है। गीता प्रेस को हालांकि किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद आते हैं, गीता प्रेस की बात करते हैं, तो अलग ही and this is after Mohit, Prime Minister Modi's ode to the Gita Press. He hailed it, saying this is an ode to humanity in today's time, and saying the office is no less than a temple. Big roadshow by Prime Minister Modi as well after that. But for the moment, let's shift our